પાંડેસરા જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં આવેલી એક મિલમાં કામ કરતી વખતે 20 વર્ષીય યુવકને કરંટ લાગતા મોત થયું છે. મૃતકની ઓળખ સનીકુમાર ગુપ્તા તરીકે થઈ છે. તે મૂળ બિહાર રાજ્યના વતની હતા અને હાલ સુરતના ગણેશનગર પાંડેસરામાં પરિવાર સાથે રહેતા હતા. ઘટના બાદ પરિવારજનોએ જાણ થતાં તેઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. પરિવારમાં માતા પિતા, 2 દીકરા અને 2 દીકરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ કરુણ ઘટનાને પગલે પરિવારે મિલ સંચાલનની જવાબદારી નક્કી કરવાની માંગ ઉઠી છે. પાંડેસરા પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. પોલીસ ઘટનાના कारणों अंगे तपास हाथ धरी रही है। दिलीप सिंह। दिलीप भाई, आप कहाँ कितने सालों से क्या पे काम करते हो? मैं तो दूसरे में आकाश में करता हाँ, क्या काम करते हो? ये मिल कौन सी मिल में घटना बनी? ये कौन सी जगह पे घटना बनी? ये कहाँ पे आई? पांडेसरा। ये क्या घटना बनी थी? वो पावर साइड उतर गया होगा। कितने साल की उम्र है वो बच्चे की? 22 साल में 20 साल। शादी हो गई जो बच्चे? शादी। कितने सालों से आपके साथ काम करता होगा? शायद कितना 2-3 साल 4 साल होगा। उसको जितने साल होगा पक्के में पगार जाता है, काम करता है उसको जाता है। कल कितने बजे घटना बनी? रात में हुई। सीसीटीवी है वहाँ पे? सीसीटीवी होगा, ऐसा थोड़ी होगा। आपका नाम क्या है? हमारा भोला भाई नाम है सर। क्या है आपकी मांग, क्या है? हमारा मांग अभी सभी लोग से मांग कर रहे हैं कि अभी इकट्ठा में बात करें, उनको पापा से बात करें, उनका मम्मी से क्या अभी फैसला है, एक साथ में बात करिए उनको हम बता सकते हैं।